Welcome back. This is Gender Discourse, and today we are having a discussion on the Women Reservation Bill. Well, before we went into the break, Mr. Madhu from the Congress very categorically said that yes, the bill can definitely go for some changes, but at least let it pass first. The amendments can definitely come in later. So, Amarjit ji, I think you had something to add to that. Yes, I was saying that's the question of modalities. Once you decide as a democratic highest institution that you are going to give reservation to women, then it's question of modalities. How much rotation, for how many years rotation and all. Those things can be looked into and some consensus can be brought about after discussion with all the political parties, what they are going to do, 5 years or 10 years or 15 years. That all can be discussed before passage in Lok Sabha also. Parties can sit, let them put forth their viewpoint when the discussions take place and strongly tell why they are for 10 years or why they are for 15 years, why they are 5 years. But one thing I want to say, we don't want to go back to the debate that political parties should give seats within their parties 33% and put up the candidate. I know every party can give 33% seats while deciding about the candidates. If I decide, my party decides 300, out of that 100 we can put up. But who is going to guarantee that they are really going to be there in that number? Even with that, it may happen that your percentage in parliament remains less than 10%. That is why I am from left. Even I am telling you, until and unless there will be reservation of seats, women won't get sufficient spaces. They won't get. That is why we have been telling certain things in society you have to coerce. करना पड़ता है ना, जैसे आपने SC ST एजुकेशन में किया, रिजर्वेशन जॉब्स में किया, इसी तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन करना है सोशल चेंजेस लाने के लिए. उसी तरीके की क्वेश्चंस में ये एक क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन देने से भी विनेबल सीट्स नहीं मिलेंगी, दूसरी सीटों पे खड़ा किया जा सकता है, खाना पूर्ति इलेक्शन कमीशन के लिए की जा सकती है, लेकिन महिलाओं को स्पेस नहीं मिलेगा. तो मैं स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ उस डिबेट में हम अब दोबारा नहीं जाना चाहते हैं. हम ये सीधे कहना चाहते हैं कि इसकी मॉडलिटी के ऊपर डिस्कशन हो. अच्छी बात है लोकसभा के अंदर किन्हीं चीजों के ऊपर कंसेंसस भी बन जाए, वैसे सीन्स ना हो जो राज्यसभा में हुए हैं, क्योंकि लोकसभा से और भी लोगों की ज्यादा उम्मीद है. आपका डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है. सो आई एम विशिंग दैट देयर विल बी हेल्दी डिबेट. I want to look forward for that, and I would appeal to everybody for that. Absolutely. So at this point, I think I'd like your reaction here, Shailendra ji. मैडम, peaceful debates. अपर हाउस में जो हुआ है महिला आरक्षण बिल को लेके, बहुत ही शर्मनाक दिन था. Absolutely. ऐसा नहीं होना चाहिए था. शुरू से हम लोग, हमारे लीडर्स कह रहे थे कि सभी पार्टी लीडर्स को बुला के बैठ के वार्ता करके एक आम सहमत बना के इसको पास कर दीजिए. ना तो सरकार ने किया और ना तो यहाँ तक समझ लीजिए कि स्पीकर ने किया. एक बार हमारे जो है मेंबर्स विरोध करते रहे, एक बार भी किसी भी सभापति, किसी भी डिप्टी स्पीकर ने बुला के हमारे नेता से ये नहीं कहा कि अपने मेंबरों को समझा लीजिए क्यों ये विरोध कर रहे हैं. और उसके बाद आप जो है, आपको ये भी नहीं मालूम है, मार्शल अगर होते, आज तो हमारे लोकसभा के मार्शल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि हम अपने हाउस में, लोकसभा में ऐसा नहीं होने देंगे. अपर हाउस का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग का तो लोअर हाउस है, हम उसका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा हम नहीं होने देंगे. लेकिन बड़े शर्मनाक दिन इसलिए कि सीआरपीएफ फोर्स बुला के फोर्सली वहां से मेंबर को बिल्कुल लाद के ब्लड निकाला है, हाथ कट गए, लोगों के बाहर फेंके गए. ये कैसा ये लोकतंत्र है बताइए. बहुत शर्मनाक दिन था. हम नहीं चाहते, हम फिर यही कहना चाहते हैं कि जैसे पहले ही कर लेते. अब अंत में जो है, आज जो है प्रणव दादा ने कहा कि ठीक है बैठिए, सब लीडर्स को बुलाए, बात किए. अब प्राइम मिनिस्टर सब तैयार हो गए कि ठीक है सभी लीडर्स को बुलाएंगे, जैसा आप कहिएगा आम राय सहमत होगी, बिल पास होगा. हम लोग एग्री हो गए. हाउस चल रहा है इस समय. We really need to show our panelists as well as our viewers today who are watching that what Mr. Pranab Mukherjee actually had to say, whether they did take the consensus of the parties or not in this regard. Let's take a look. My first observation is all these issues can be raised, can be debated and can be decided upon by this house only, by 543 members sitting here belonging to different political parties. They
and they alone can decide all the contents of that. नहीं, अब आप सुनिए, Therefore, this देखिए, is nothing. हाँ. I am not going into the merit of it. The fact of the matter is, on this issue, there are divergences of the views. Certain political parties, they also represent the people's view. They came to certain conclusion that this piece of legislation will have to be brought in. There were debates. All of you are fully aware of, there were discussions. We could not, unfortunately, reach at a consensus. I myself participated several rounds of talks. Former Home Minister Shivraj Patil ji took meeting. Dr. Manmohan Singh took meeting. Before UPA won, during the NDA regime, various attempts were made to arrive at a consensus. Various formulations are worked out. But certain political parties took a particular view, certain political parties took a different view. Well, so that was Mr. Pranab Mukherjee, who said that yes, we did talk to the parties and there was a consensus at that time, and suddenly we saw this unruly behavior. So Poonam ji, what's your comment on that? मुझे ये लगता है कि जो भी जिनके रिएक्शंस रहे नेगेटिव पॉजिटिव, जो जिनको कहना था वो लोग कह चुके हैं, लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगी कि अगर ये बिल पारित हुआ है राज्यसभा में तो आई फील हैट्स ऑफ टू द ऑल मेल मेंबर्स एमपीज ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वहां हम अल्पसंख्या में हैं और अगर ये बिल पारित हुआ है तो ये उनकी ही मर्जी और उनकी इच्छा से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए वोट किया है, तो हेड्स ऑफ टू देम। और मुझे लगता है इसी तरह से वो लोकसभा में भी ये बिल पारित कर देंगे, तो आई फील हेड्स ऑफ टू देम। Right. And Madhuji, do you think that once the bill is passed and once we have more number of women represented in the parliament, maybe we will see less of this kind of unruly behavior that we have been watching these last few days? Not necessarily. In many places, even women is quite violent, and we have seen the last Lok Sabha women coming and shouting. So it doesn't go with the gender. So it's behavior of the people, and sometimes the issue also makes them to get into violent decisions. But hopefully, this as we all agree that whatever happened that shouldn't have happened, and I don't think this, particularly though what's happening in the state level, Parliament, it's more and much lesser instance of such happened, and this was first instance happened in Rajya Sabha, they says. So hopefully we don't hope that these things will repeat. We definitely don't need no repetitions of this. We hope not. Yes, absolutely. Yes, मैं ये कहूंगी कि राज्यसभा में अगर मार्शल्स के बिहेवियर को ये कहना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तो मैं ये भी कहूंगी कि वो भी बहुत शर्मनाक था हामिद जी के हाथ से जिस तरीके से बिल पकड़ के छीन के फाड़ा गया। तो एक साइड का व्यू देने की जरूरत नहीं है, अगर उस तरीके की सिचुएशन आई तो फिर पहले उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट भी की गई। एक तो मैं इस पे जरूर कमेंट करती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि मधु जी से इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अगर कोई इशू एजिटेट कर रहा है तो महिला को भी अधिकार है एजिटेट होने का, तो वो करेगी। लेकिन ये मैं आपसे सहमत हूँ कि महिलाओं के आने से ग्रेस बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट के इश्यूज ज्यादा फोकस होंगे। वो माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी, जब महिलाओं की गिनती बढ़ जाती है ना किसी भी सभा के अंदर, मेल की लैंग्वेज भी सुधरती है, डिस्कोर्स अच्छा होता है, तो ये ओवरऑल पार्लियामेंट की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। Well, at this point, let's slip into another break here in Gender Discourse. People, do come back quickly as we are still talking about the Women's Reservation Bill and where it stands today. Welcome back. This is Gender Discourse, and today we are talking about the Women Reservation Bill.
Well, we are all hoping that the bill does get passed, as we are all waiting for it to pass, because as we've been discussing here, the situation of women definitely will improve once the bill is through. So, Mr. Madhu, I want to talk to you here regarding the health sector of women. If we talk about the health of women is really wanting in this country, because if you go by anemia, if you go by the premature births that are happening in this country, or how many women are dying in the deliveries and all that. So, do you think that once the women are there at the helm of affairs, these kind of issues will definitely come into prominence and some action would be taken? Well, this is obviously, people say it is general belief that women is more focused, or that is agreeable, but health and education is still not to be addressed. We have this national rural health mission, but the biggest problem of this health, first doctors, neither nurses, nobody wants to work in those rural villages. So we have bringing the new legislation, we are bringing a 3-year course which medical council has to approve it. As you said, it is very pathetic. The primary healthcare system is completely drained in the country. It's neglected. Tribal areas, every seasonal, people dying because lack of basic healthcare system there. So in Andhra Pradesh, we have a new healthcare system, Rajiv Arogyasri, where people below poverty level covered up to 2 lakhs rupees, but those are not covered regular diseases or seasonal diseases. So we have to strengthen the public healthcare system. Absolutely. Obviously, when women comes or not also, this is something to be addressed at war foot level. Government has to still allocate more funds. The funds are there, but the implementation is the problem. And drastical changes, like I have a wife at home, my wife is a doctor, but we used to rural health care like diabetic camps, but still through the rural health mission also not enough attention is given, not proper implementation is taking place. So we have to work on together to bring the better healthcare system to the people. That's true. It seems as if we were supposed to do that yesterday, and we are still lacking in that regard. Amarjeet ji, what are your comments on that? I think, of course, there will be certain issues which will become more focused. For example, female infanticide, female feticide. This will be important issue for women. Similarly, girl child education, training, job, conducive environment in jobs, no sexual harassment at workplaces. This will be important issue for women MPs to carry forward. And I think if women organizations keep lobbying with women MPs, they lobby with men MPs also, but if they lobby with women MPs, the issue of equal pay for equal work, issue of maternity benefit coverage to almost 95-96% who are in unorganized sector, for them, so that it becomes important. And then of course health is very, very important, because if you look at the data of indebtedness of the families, you find it is mostly they take credits or loans for health purposes of the families in the rural and downtrodden, and women suffer a lot because primary health centers don't function appropriately and all. Maternity becomes important issue because female maternity mortality rate is still, maternal mortality rate is still there, infant mortality rate is there. Of course some more work will have to be done. It won't happen on its own, because women are there in large number, that these issues will come up. I think the women organizations and the men who are sensitive towards women, they will have more constituency for them to address. So many women MPs who can become focus of it, and through that psychology, I think these issues will get significantly, these will become very, very important issues in the parliament. Cut down the dowry system also? Of course, why not? Why not? Because now more and more women can get into the legislature. I think dowry issue, domestic violence. आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे बात हो रही है, डाउरी की बात हो रही है, कि अगर ज्यादा औरतें आएंगी तो इस तरह की चीजें भी कम से कम उस पर भी कुछ लगाम कसी जा सकेगी? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो लगाम नहीं कसा जा सकता। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए। जैसा अभी हेल्थ के बारे में कहा गया, ये बात सत्य है कि आज भी बच्चों 45% पूरे देश में बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं। जहां तक महिलाओं की बात है, उनके अंदर भी ब्लड के अंदर जो है रेड कार्ब्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके वजह से उनकी सेहत इतनी खराब है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा अभी डिस्कशन में हुआ है।
और जब तक हम बच्चियों को, खासकर लड़कियों को, हम एजुकेशन से लेके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और अन्य तरह की जो भी सुविधाएं वो नहीं देंगे, नौकरियों में नहीं देंगे, या और जगह जहां पर वो पढ़ने जा रही कंपटीशन में उनको नहीं देंगे, मेरे ख्याल से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। जब वो प्राइमरी एजुकेशन से लेके उन पे हम ध्यान देंगे, तब जाके जो है उनके अंदर जो है प्राइमरी एजुकेशन से लेके आपको जो है उनके एम्प्लॉयमेंट तक आप अगर ध्यान देंगे, तब जाके ये सब जो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, दुश्वारियां, वो दूर होंगी, तब जाके महिलाओं का जीवन स्तर हम सुधार पाएंगे। रहा सवाल कि पार्लियामेंट में 181 चुन के आएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, सबको देखेंगे, नहीं कर पाएंगे। हमको प्राइमरी एजुकेशन से लेके, बच्चियों से लेके उनके रोजगार तक अगर हम सुदृढ़ कर देंगे, मजबूत कर देंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, उसी दिन ये डावरी फावरी जितनी दिक्कतें हैं, बुराइयां, सब खत्म हो जाएंगी। So Poonam ji, your reaction on that? Do you think that the focus on the girl child will be a little more if the women are there at the head of आई affairs? थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जरूर फायदा होगा, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि रातों रात कोई मैजिक चल जाएगा या फिर पार्लियामेंट को ईमानदार हो जाएगी रिजर्वेशन आने से, या बहुत फर्क हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। धीरे धीरे सिचुएशन, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होगी। जो हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा जादू होने वाला नहीं है। जो ग्रास रूट पर गांव में हमें काम करना है, वो तो एनजीओस को, सरकार को, एमपीज को, सबको मिलकर करना पड़ेगा, और उसी से ही फर्क आएगा। अगर 50% भी महिलाएं पार्लियामेंट में बैठ जाएं, तो भी इससे उनके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होने वाले। I think the NGOs need to be given a big credit for this bill really coming up. I mean, how much they have worked towards it to push it through, you know. Yes. So, would you like to, if they're watching today, would you like to tell them something, Mr. Oh, yeah, many NGO groups like Women Power Connect, the WPC, and many other groups have worked on this quite agitatively, and make them members to aware of it, and make more legislative to sensitive about it. Not only this issue, but they also taken up many women issues like malnutrition to save women child, and many issues NGOs are working it. But not all NGOs are really working for the cause. So many fraud NGOs also there. So we have to be careful about it. That's right. I think the media has played a very big role in this. Yes, of course. Women organizations, जो mainstream women organizations हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनको सपोर्ट करती हैं या वो उनमें काम करती हैं, उनका मैं ज्यादा रोल मानूंगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा लीड ली थी 93-94 में बेजिंग कॉन्फ्रेंस से पहले, जो 95 में हुई। और बेजिंग कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की सारी अक्रॉस द पार्टी लाइंस वहां बोल के आई थी, हमने पंचायत और कॉरपोरेशन में दिया है, अब हम लड़ेंगे कि ये हम असेंबली और पार्लियामेंट में लें। उसके बाद ही आकर के फर्स्ट स्टेप्स लिए थे पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट मांगने के, और तब कहीं 96 में पहली बार बिल आया। इसमें मैं ये कहूंगी कि उस समय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी काफी एक्टिव रोल अदा किया था। और जब यूपीए 1 बना, तो उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो पहला ड्राफ्ट आया, तो उसमें नहीं था। तो उसके लिए लेफ्ट पार्टीज ने तो लिखा ही, लेकिन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ होके, वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी या लेफ्ट की थी या एनजीओज थी या कोई और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी थी, सब एक साथ होके तब जाके यूपीए चेयरपर्सन को मिले थे कि ये इसके अंदर क्यों नहीं आया है। तो वो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट बन गया। वो पार्ट बनने से एक कमिटमेंट गवर्नमेंट की उस टाइम हुई थी। उनकी कंपल्शंस क्या रही क्या नहीं, हम लोग तो मांगते रह गए, वो हुआ नहीं। और उसके बाद इस यूपीए 2 में शायद उनको ये लगा कि अब जो विरोध भी करते हैं उससे सरकार नहीं हिलेगी। वाजपेयी जी के सामने बहुत मजबूरी थी, समवार पार्टी टू दैट कैबिनेट का हिस्सा थे। और यूपीए 1 में भी शायद मनमोहन सिंह जी की क्या मजबूरी थी कि वो लोग विरोधियों में से कुछ कैबिनेट का हिस्सा थे। और अब जो है ऐसा कुछ था नहीं, शायद पुश करना भी थोड़ा आसान हुआ या कैसे हुआ। तो मैं ये कहूंगी क्रेडिट सभी को जाता है, सभी को क्रेडिट जाता है, यस होल कंट्री। और इसको ग्रेसफुली कहा है, वन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबॉडी हैज कमिंग। प्राइम मिनिस्टर ने भी रिकॉग्नाइज किया है, यूपीए चेयरपर्सन ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, और लोकसभा स्पीकर ने भी। ये सबका
एक किस्म का कंट्रीब्यूशन है, और मैं ये समझती हूँ कि जो विरोध भी किए वो अब इसके साथ हो जाएं, जो बाकी इसमें निटी ग्रिटीज हैं और फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स और चेंजेस की बात है उसमें सबको साथ लेके चले तो चलेगा, लेकिन ये जो राज्यसभा से प्रोसेस शुरू हुई है, लेट अस सी टू इट दैट इट goes through Lok Sabha also. Well, it will be good for the country. I think in this point I'll have to ask. To take them on board, my suggestion is media also should play cautiously. Right. Virodhi, they are not Virod against the women reservation bill it's in and itself. They are Virod about, they are making, while accepting the reservation, they wanted to bring in some change within it. So let's not brand them as that they're against the reservation. Right. So we have to take their support also. So we've got to be fair to them also. अब शैलेंद्र जी से बोल रहे हैं कि अब आगे के लिए सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। अब तो रहा सवाल यही बात पहले हो जाती, जितने हमारे सरकार में बैठे नुमाइंदे, यूपीए के चेयरपर्सन, ये पहले ही बैठ के सब लीडर से अगर आम सहमत कर लेते तो मेरे ख्याल से राज्यसभा वाली नौबत ना आती। अब जैसा अभी मैडम कह रही थी कि जो कुछ हुआ राज्यसभा में हुआ तब ये हुआ, ऐसी बात नहीं, क्यों हुआ वो नहीं होना चाहिए था मेन चीज। अब आज जो है सीपीआई के हमारे गुरदास गुप्ता जी आए, हम लोगों ने कह दिया कि जो निष्कासन हुआ उनको वापस कर लिया जाए। हमने कहा सब कुछ तो आपने करवा लिया, एक तरफ आप मार भी रहे हो, सब कुछ बेइज्जत हो गया, अब आप वापस कर लो। हम जो है इसकी भीख नहीं मांगते। हम लोगों ने तो कह दिया कि केवल वही जो निष्कासित 4 मेंबर नहीं हमारे साथ जो हुए हैं, पूरे जितने हमारे मेंबर्स थे 10-12, वो सबने ये तय कर लिया था कि हम हाउस जाएंगे, हाउस नहीं जा रहे हैं हम नहीं झुकने वाले, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने वुमेन रिजर्वेशन पे हमने महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है, इसलिए वहां पे पोजीशन क्रिएट हुआ, और पोजीशन क्रिएट होने के लिए जिम्मेदार सरकार है। यूपीए के चेयरपर्सन माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार के लोग हैं, जो इन लोगों ने सपोर्ट किया वो जिम्मेदार है इसके। अब आम सहमत बन जाएगी, ठीक है, बिल पास हो जाए। Do you have anything to say finally? I feel, it will be passed in the Lok Sabha very soon, and it will be good for all the ladies even of the country, all the NGOs who have even worked hard. And I would like to even, say 3 cheers for the media. They have always projected as things are, and they've really played a nice role. So I think I should need to say thank you from on behalf of the whole media here, that if you people have recognized our efforts over here. Well, at this point I'd like to say thank you to all 4 of you for taking time out and speaking to us on this issue. Thank you. Thank you for coming. Well, people, women across all party lines, NGOs and the common women would definitely want the Women Reservation Bill to be passed. Amendments, if any, can come in later. After all, it's time that the condition of women improved in the country at all spheres. Having a woman at the helm of affairs will definitely go a long way in understanding women's issues. A country that boasts of women in the highest offices can only stand to gain once the bill gets passed with an all-party consensus. On that positive note, it's time for a wrap of today's edition of Gender Discourse. I'll see you next week with another engaging discussion on another gender issue. Till then, this is Lottie Alaric saying goodbye and take very good care of yourselves.